Hello, everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So, this is Yashika from SwiftLearn, and I am back here again with another informative lesson for you on English. So, as per your demand, I am back here again with SwiftLearn, that is India's most sincere learning destination for classes 1 to 10. And we try harder each day so that you learn better. So, yes, I am here again with another video on English for you. So, let me just tell you what this video is going to be about. उससे भी पहले let's quickly talk about SwiftLearn, that why SwiftLearn is India's most sincere learning destination, because we provide 100% live and interactive classes with individual attention, dedicated academic mentor team, and of course we do cover your school syllabus. So this is why we are India's most sincere learning destination. So, yes, Yashika ma'am is back here again, and today we are going to enjoy, learn, interact with each other in this session. Moving forward, let me tell you that SwiftLearn has a lot of key features. So, before enrolling yourself in the trial class, keep all these points in your mind that I'm going to get detailed progress reports. मुझे मौका मिलेगा to participate in SwiftLearn academic test series. I can take unlimited practice tests that could be subjective test also. So now you get to know our key features. आगे चलेंगे, and I am now going to tell you that what the topic is going to be. So yes, we are going to talk about English language but in a different manner today, क्योंकि आज का जो lesson होगा वो होगा on the word power of your words. So but आपको क्या करना है? You need to watch this whole lesson till the end. बीच में नहीं छोड़ना. You need to watch it till the end. But if you are liking the session, do not forget to subscribe to the channel so that I can come up with another video for you, more such videos, and you're not going to miss them. अब क्या करना है? Like, comment and share if you are enjoying this session with your Yashika ma'am and of course SwiftLearn. तो हमने बात करी थी word power की, the power of your words. So tell me, are you a logomaniac? क्या आप एक लोगोमेनियक हैं? Oops, you must be thinking ये मैंने आपसे कैसा वर्ड बोल दिया. So are you an allurophile? Again another difficult word. So you must be thinking आज ये मैम कैसी words लेके आ रही है हमारे लिए. Logomaniac, allurophile. So let me tell you, this is your word power, और इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं. The power, the knowledge of your words, and how you can improve your language learning journey with the help of word power. तो आगे चलते हैं. Let me tell you that English is also called as lingua franca. क्यों? Why lingua franca? Because it is that common language which is used between different speakers, different native speakers whose languages are different. तो it is nothing. English कुछ नहीं है, पर फिर भी सब कुछ है. It is a global means of communication. So learning English is very important. तो उसके लिए क्या important है? You need to learn the word power, the vocabulary. अब vocabulary में होता क्या है? Different types of words. कितने words आप use कर सकते हैं? That's your vocabulary. But जब हम vocabulary की बात करते हैं तो बात ये आती है कि sometimes you use some words to speak and then to write, and in the other cases you only listen to them or you only read them. So when you are speaking the words, you are writing them, you know their meaning confidently, so you are using your active vocabulary. But on the other hand, when you are just listening to some words, for example in a movie, on radio, on a news channel, or you are reading it in a storybook, you exactly don't know its usage, you are not using it actively. That is a part of passive vocabulary. तो active और passive vocabulary आपके सामने आ चुके हैं. When you are speaking, writing, using those words actively, you know the meaning, you're confident about them. Hence, it's a part of active vocabulary. But when you don't know the meaning, आपको पता नहीं है use कैसे करना है, but you're just trying to get familiar with those words, that is your passive vocabulary, which you acquire through reading and listening. तो दोनों equally important है. Listening, speaking, reading, writing, all four skills are important. तो अब देख लेते हैं कि हमारे सामने vocabulary के बारे में एक बहुत ही अच्छा सा कोट है. Words have energy and power with the ability to help, heal, to hinder,
to hurt, to harm, to humiliate and to humble. तो आपको पता है यहाँ पे आपके लिए क्या समझना जरूरी है? That your words have a lot of power. You can't even imagine the power of words. So words have so much power कि आप अपने words से you have the power to humiliate someone, and at the same time you have the power to be humble with them. तो यहाँ पे आपको क्या समझने की जरूरत है कि your words have the lot of power, पर आपको वो power कैसे use करनी है, it depends on you. Whether you would like to harm somebody, hurt, humiliate them with the help of your words, or you would like to be humble with them on the other hand. So of course you're going to use the second option, कि you are going to be humble with them in every case. So आज के बाद whenever vocabulary will come to your mind, तो आपको मेरी ये बात हमेशा याद रहेगी that words have a lot of power. You can harm anybody, humiliate anybody, or you can humble them. Choice is yours कि आपको अपने words कैसे use करने हैं. So life learning भी मिल गई यहाँ से. अब आगे चलते हैं. Vocabulary learn कैसे करेंगे? Experiential learning. Learning from the experiences present around you. नंबर वन, आपको ढूंढना है एक कंक्रीट एक्सपीरियंस. कोई भी स्टोरी बुक रीड करनी है, ट्राई एंड रीड अ स्टोरी बुक, ट्राई एंड रीड अ नॉवल, और राइट अ पोम, राइट एन ऐसे, कुछ भी कंक्रीट विच इज टैंजिबल, जिसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं. देन ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन इट. क्या करना है आपको? ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन इट. रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन कीजिए कि मैंने जो वर्ड्स उस स्टोरी में, नॉवल में, पोम में सुने, सो एम आई ट्राइंग टू ऑब्जर्व देम इन माई सराउंडिंग्स फ्रॉम द नेटिव स्पीकर्स. आगे जाके न्यू वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी में ऐड होंगे. मे बी टुडे यू लर्न दैट इफ यू वांट टू कॉम्प्लीमेंट समबडी, यू कैन से यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल. एट द सेम टाइम यू कैन से यू आर लुकिंग प्रिटी. सो जब न्यू वर्ड आया, उसको माइंड में एसिमुलेट करना है. फाइनली न्यू वर्ड्स जो आप लर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूज, मूवीज, स्टोरीज, नॉवेल्स, उनके साथ करना है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन. यू नीड टू अप्लाई देम इन योर रियल लाइफ, इन योर लैंग्वेज. तो ये कैसे यूज होगा? विद द हेल्प ऑफ एक्टिव वोकैबुलरी. तो पैसिव वोकैबुलरी से आप क्या कर सकते हैं? यू कैन जस्ट ओनली try to get familiar with new words, but with passive vocabulary आप क्या कर रहे हैं? यू आर लिसनिंग टू देम, यू आर रीडिंग देम, गेटिंग फेमिलियर. एक्टिव वोकैबुलरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं. पैसिव का भी उतना इंपॉर्टेंट रोल है. आगे चलेंगे तो जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ कि हियर यू हैव द कंक्रीट एक्सपीरियंस. वो कुछ भी हो सकता है. दैट कैन बी रीडिंग अ नॉवल, दैट कैन बी राइटिंग अ पोम, एनीथिंग. उसके बाद उसको करना है ऑब्जर्व अपनी सराउंडिंग्स में. ऑब्जर्व करना है नेटिव स्पीकर्स को, इंग्लिश मूवीज को, दैट हाउ दीज वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड. फाइनली अपने माइंड में न्यू वर्ड्स को करना है एसिमुलेट, और उसके बाद हमें क्या करना है? कनेक्ट आइडियाज एंड देन अप्लाई इट इन योर रियल लाइफ. तो ये हो गया हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग का साइकिल. पहले एक्सपीरियंस लेना है, ऑब्जर्व करना है, माइंड में कंसेप्चुअलाइजेशन, फाइनली एक्सपेरिमेंट इट इन योर लाइफ. तो अब यू नीड टू एनहांस योर पैसिव वोकैबुलरी बाय रीडिंग, बाय लिसनिंग, क्योंकि स्पीकिंग और राइटिंग से इंप्रूव होगी एक्टिव, पर passive vocabulary also plays an important role in your speech refinement and helping you become confident. तो अब आगे चलेंगे. तो let me just tell you, active experimentation is very very important. अगर आपने words learn कर लिए, you have read it, you have spoken, but yet you are not using them in your life, then not, it's not going to be fruitful for you. तो हमें क्या करना है? You need to become a logomaniac. Remember in the beginning of the session I asked you that how many logomaniacs are there out, but अब आपको समझना है कि लोगोमेनियाक कौन है. सो अ पर्सन who is obsessively interested in words, really, कि उसको different words सुनने हैं, सीखने हैं, use करने हैं. So there are so many words अभी आपके सामने दिख रहे होंगे आपको, that you have binge watching. Binge watching is what? This is when you watch so many episodes of a series in one go, quick succession over an extended period of time. So binge watching, chillax, alacrity, promulgate, rage quit, mic drop,
इतने सारे वर्ड्स. सो ये सारे वर्ड्स, अगर आपको सिर्फ यही वर्ड्स नहीं सीखने, इवन मोर देन दिस, देन यू विल बी कॉल्ड एज एन एक्चुअल लोगो मेनियक. तो मैं चाहती हूँ कि आपने क्या करना है, यू आर गोइंग टू बिकम अ लोगो मेनियक, बट फॉर दैट you need to get ready with your word power. You need to shock the world with your proficiency. Maintain a small note, keep on revising whatever you learn, and teach these new words to your friends and family. This is very important. When you teach, you learn. Okay, तो हमने किस चीज को फॉलो करना है? The cycle of experiential learning. This is really going to help you improve your word power. So to all my logomaniacs watching this video out there, I hope ये active passive vocabulary का session on English language learning आपको पसंद आया. So I tried to cover different aspects of vocabulary in this session. आपको मैंने समझाया how you can improve your vocabulary, how you can actually implement the newly learned words in your language, and you are there and you're going to become a logomaniac soon. ठीक है. सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, ये वोकैबुलरी का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल था, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई एम गोइंग टू कम अगेन विद another session for you, of course on English and other topics too. So do not forget to like, share. मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए. I'll be meeting you in the next session. Till then, take care. Bye bye. See you again, and all the very best to my logomaniac.